Hello everyone. So welcome to all of you. We heard about old pension scheme, then new pension scheme, and now government have recently announced unified pension scheme. Now, what are the differences which we are able to see in between NPS and UPS? UPS is going to be beneficial or not? Opt करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ऊपर complete information मैं share करूंगा इस particular video में in time. So if you feel that the video is worth watching for all of you, please subscribe the channel. Do not miss to subscribe the channel for the relevant information in the upcoming days. आइए बात करते हैं इसके बारे में. सो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है आपका, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम 1st of April 2025. इट विल बी इंप्लीमेंटेड. द फर्स्ट एडवांटेज and the positive change which we are able to see in the UPS, that is going to be the contribution of government of India. In NPS, government contribution was 14%. In the UPS, the contribution of government of India is going to be 18.5%. तो यहाँ पर government का contribution 4.5% से increase हो रहा है. It means previously the contribution in NPS was 10% from the pocket of employee. तो 10% employee की pocket से होता था and 14% from the pocket of government of India. So 25% of basic pay per month आपका contribution जाता था. Now it will be 10% from the pocket of employee and 18.5% from the pocket of Government of India. So it is going to be 28.5% monthly contribution of the basic salary as the contribution under UPS. So it is going to increase your pension automatically. I hope you are getting my point. तो यहाँ पर आपका pension increase होगा, with that government के ऊपर burden भी increase हो रहा है. So government is going to get the additional burden of 6,250 crore rupee because of UPS, Unified Pension Scheme. अभी यहाँ पर government ने एक announcement किया हुआ है, उसको समझिएगा कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं on 31st of March 2025, they will opt for UPS before that. They will be getting the benefit of UPS in the form of arrear. So there will be approximately 800 crore rupee which will be paid by Government of India to the people, those who are getting retired on 31st of March 2025, in the form of arrear to give the advantage of this UPS scheme. इसके बाद एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जैसे कि एनपीएस है आपका. तो एनपीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2004. इट वाज अ कंप्लीटली स्कीम व्हिच वाज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन. इफ योर कंट्रीब्यूशंस वर हायर, you were able to get high pension. If your contribution was low, you were able to get only low or minimum, whatever the minimum NPS was there. So that was the NPS scheme, which was completely based on the contribution. Higher the contribution, higher the pension. But OPS, old pension scheme, was a scheme where Government of India have assurity of minimum 50% of basic pay in the form of pension. Similar type of concept government is using in UPS. But one thing government made very clear, the people, those who are opting for UPS, they will not able to go back to NPS in future. मतलब आप एक बार मूव कर गए NPS से UPS पर, उसके बाद आप वापस NPS पर नहीं जा पाएंगे. Now, in the UPS, government have given the assurity of minimum 50% of basic pay. In the last 12 months, they are drawn in the form of salary. So, minimum 50% of basic pay will be the pension, in the form of pension, provided to the people, those who have completed 25 year of services. जिनका 25 साल complete हो गया है, उनको कम से कम 50% उनका बेसिक पे in the form of pension provide किया जाएगा. So that is a good part. Those who have completed 10 years and above but not 25 years, they will be getting a little bit lower. So it will be decreased with the time duration. Like your time duration is low, your pension will be lower. So in that part, government is going to decide. But those who have completed 25 years, they will be getting minimum 50% of basic pay in the form of pension. ये government ने यहाँ पर announce किया है. In case of death, unfortunate death of employee while working, family will be able to get 60% of basic pay in the form of pension. तो जो भी उनका current में basic pay था, उसका 60% in the form of pension provide किया जाएगा in case of death. So this is a actually positive point of this particular news, this unified pension scheme, that in case of death there will be a minimum assurity to the family member that they will be able to get in the form of financial support at least 60% of basic pay in the form of pension. And those who have not completed 10 years of contribution or 10 year of services, so for them also government is saying that minimum 10,000 rupee will be provided in the form of pension. So this is a separate point. So I hope all the points up to here is clear.
Then indexation. Inflation is going to increase with the time. What about pension? So government is saying that pension will be getting the benefit of indexation also in unified pension scheme. तो यूपीएस में ये भी फायदा होगा कि पेंशन आपकी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहेगी। आप ये बोल सकते हो कि डीएनएस अलाउंस जो होता है, डीए जो होता है, उसका बेनिफिट भी पेंशन में यहां पर इंक्लूडेड होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट किए गए हैं। नाउ हु आर गोइंग टू गेट द एडवांटेज ऑफ दिस पेंशन प्लान? किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा? गवर्नमेंट हैव सेड दैट इफ स्टेट वांट टू ऑप्ट फॉर इट, दे शुड ऑप्ट फॉर इट और दे कैन गो फॉर इट। शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस विथ यू गाइस। आई होप द इंफॉर्मेशन वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपके जो भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड, अभी देखिए बैंकिंग में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, आई नो दैट, वो डाउट आप लोग जरूर लिखेंगे। जिन्होंने वीडियो यहां तक देखा हुआ है तो मैं उनको एड्रेस कर दूं, बैंकिंग सेक्टर में इंप्लीमेंट होने के चांसेस हैं बिकॉज एनपीएस वाज इंप्लीमेंटेड हियर, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया है कि दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर इट। तो स्टिल देयर इज अ हैवी चांस दैट इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन द बैंकिंग सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट स्टिल वी शुड वेट फॉर द नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी तो गवर्नमेंट ने इसको क्लियर नहीं किया है, बट जहां पर उन्होंने इनवाइट किया फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, डेफिनेटली इट कुड बी इंप्लीमेंटेड फॉर द बैंकिंग सेक्टर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर? हाउ यू सी यूनिफाइड दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। और कोई डाउट हो तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, जय हिंद।